Hello everyone, I'm your English teacher Shabana, and today we are going to start our new chapter number 10, Learning from Nature. So class, this is a non-fiction piece which tells us how the man has taken the inspiration from the nature to create something new for his own use. So class, first of all, I want to tell you that nature is our first teacher and we all inspire from nature to do something. Here we are going to talk about the things like primitive sphere. Primitive spheres, how did they get the idea to make a primitive sphere? They got the idea from the nature. And hanging bridge, also from the nature, and battering ram, kites and propellers also. So class, in this chapter we will know about the humans, that how did they get the idea to make spears, hanging bridges, battering ram, kites and propellers. So class, let's read the chapter and we'll know about how the nature inspired the human. So class, now we will read the first paragraph of our chapter number 10. Long ago, people began observing animals, birds, insects, and plants. Many things that they saw surprised them. They wondered if they could use what they saw. So class, in this paragraph, we have read about the early humans. Early humans watched the animals carefully to learn how they fly, how they walk, how they creep, how they hunt the animals. So class, after watching them carefully, they learn to survive in the nature. So class, all time when they saw the animals and plants, they surprised, they amazed what they saw. So class, now we will read the next paragraph. They saw the sharp teeth of the tiger, the huge curved tusk of the elephant, the powerful claws of the bear, and the sharp, long beak of the woodpecker. People can think more than animals, so they thought that they could perhaps make claws, tusk pointed beaks and sharp teeth. अर्ली ह्यूमंस ने टाइगर्स के शार्प टीथ देखे, ह्यूज कर्व टक्स ऑफ एलिफेंट देखे, एलिफेंट के टीथ देखे, कर्व टस्क एलिफेंट्स टीथ. सो पावरफुल क्लॉज ऑफ द बेयर, बेयर के पावरफुल क्लॉज देखे, उसके पंजे देखे, एंड द शार्प लॉन्ग बीक ऑफ द वुडपेकर ऑल्सो. वुडपेकर का जो लॉन्ग बीक था और शार्प, वो भी उन्होंने देखा. एंड दे ऑब्जर्व. पीपल कैन थिंक मोर देन एनिमल्स. पीपल एनिमल से ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा थिंक कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव मोर पावरफुल ब्रेन. सो दे थॉट दे कोड परहैप्स मेक क्लॉज, टस्क पॉइंटेड बीक्स एंड शार्प टीथ. दे थॉट, उन्होंने सोचा कि शायद वो भी क्लॉज मेक कर सकते हैं, एलिफेंट्स के जैसे टस्क मेक कर सकते हैं, पॉइंटेड बीक्स और शार्प टीथ भी मेक कर सकते हैं. बाय चिपिंग ऑफ बिट्स द स्टोन टर्न इनटू अ पॉइंटेड नाइफ. As we sharp our pencil, it turned into a pointed lead, na? That is chipping off bits. So they chipping off the stones, and stones turned into a pointed knife. उन्होंने इसको एज से कट किया और वो पॉइंटेड नाइफ में कन्वर्ट हो गया. दिस स्टोन नाइफ वॉज टाइड ऑन टू अ लॉन्ग स्टिक. इस स्टोन नाइफ को उन्होंने एक लॉन्ग स्टिक में बांध दिया. एंड इट बिकेम द लॉन्गेस्ट क्लॉ. और ये एक लॉन्गेस्ट क्लॉ के जैसे बन गया, एक लंबे से पंजे के जैसे बन गया. दिस वॉज द प्रिमिटिव स्पीयर. ये था प्रिमिटिव स्पीयर. प्रिमिटिव मीन्स पुराना, ओल्ड, एनिशियंट स्पीयर. ओल्ड स्पीयर बन गया. This spear was used for hunting and for protection from wild animals. The early humans used this spear for hunting and protection from the wild animal. Stone bone and shells were flattened and sharpened to make cutting tools, much like the sharp front teeth of rats. Stone, bone and shells.
स्टोन बोन और शेल्स को फ्लैट करके, शार्प करके वो कटिंग टूल्स मच लाइक द शार्प फ्रंट टीथ ऑफ रैट्स, जो शार्प रेड के फ्रंट टीथ के जैसे होते थे, उनसे कटिंग टूल्स बनाते थे. नियरली 3000 year ago the Greeks observed rams fighting. 3000 years पहले जो ग्रीक्स थे, ग्रीस में रहने वाले जो लोग थे, वी कॉल देम ग्रीक्स. तो ग्रीक्स लोगों ने ये ऑब्जर्व किया रैम फाइटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम? द मेल शीप. मेल शीप के हेड पर बहुत ही हार्ड फोरहेड होता है, स्ट्रॉन्ग फोरहेड होता है, उनके हॉर्न्स होते हैं बड़े बड़े, एंड इट इज़ वेरी टफ. दैट्स वाई दे मेड अ metal forehead of ram of a male sheep, and they use that in the fighting, in the battle. The ram with his strong broad forehead and curling horns comes charging and hits hard with his head. So the Greeks made a ram's head out of metal and fixed it onto a thick long wooden beam. उन्होंने एक लंबे से wooden beam में उसको fix कर दिया. This was a battering ram. This was a battering ram. ये battering ram कहलाता था. It was used to break down the gates of the enemy's fort. ये एनिमी के फोर्ट के गेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता था. यू मस्ट हैव सीन अ स्पाइडर्स वेब. द थिन थ्रेड्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. जो पतले पतले थ्रेड्स होते हैं ऑफ द स्पाइडर्स वेब, दैट वर वेरी strong. A big fly may fall into it or the wind may blow hard, but nothing happens to the web. A big fly may fall into it or the wind may blow hard. एक बड़ी सी फ्लाई, एक बड़ी सी हाउस फ्लाई उसके अंदर गिर जाए या बहुत तेज विंड भी चले, हार्डली वहाँ पे ब्लो हो विंड, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती. बट नथिंग हैपन्स टू द वेब. इट गोज ऑन स्विंगिंग, बेंडिंग एंड रॉकिंग. स्विंगिंग वो मूविंग करती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड बेंडिंग एंड रॉकिंग. इट डज नॉट ब्रेक. वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होती. अ हैंगिंग ब्रिज लुक्स लाइक अ वेब. एक हैंगिंग ब्रिज एक वेब के जैसा ही दिखाई देता है. सो क्लास, ह्यूमन इंस्पायर्स बाय द नेचर. हियर द हैंगिंग ब्रिज, we are talking about a hanging bridge, and hanging bridge inspired by a spider's web because it looked like a spider's web, but it is made of steel, rope and chains. The seeds of some trees have two curved blades or wings. The seeds of some trees, कुछ ट्रीज के जो सीड्स होते हैं उनमें टू कर्व्ड होते हैं, टू कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं और विंग्स होते हैं. दे आर कैरीड बाय द विंड. जो विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं. दे गो राउंड एंड राउंड. वो राउंड एंड राउंड जाते हैं. दिस के पीपल द आइडिया टू मेक प्रॉपलर्स फॉर एरोप्लेन्स. जिस वजह से लोगों को आइडिया मिला प्रॉपलर्स और एरोप्लेन्स बनाने का. सो क्लास, हैव यू सीन द प्रॉपलर सीट? Propeller seat always have two wings, and for this the people got the idea to make an aeroplane propeller. Dry yellow leaves fly about smoothly in the air. Perhaps people made kites looking at these leaves flying. So class, dry yellow leaves fly about smoothly in the air. The dry yellow leaves flight yellow leaves gave the idea to the people to make the kites. So class, there are some examples in which the people inspired by the nature. First is the primitive spear. Primitive spear inspired by the animals. They have claws and sharp teeth and tusks and pointed beaks. And the next is battering ram, is inspired by the male sheep, that is ram. And the next is the aeroplane propeller. Aeroplane propeller inspired by the propeller seed, because propeller seeds have two wings.
So human got the idea from the propeller seeds. And for the kites, when they saw dry yellow flight leaves, they got the idea to make the kites because dry yellow leaves fly smoothly in the air. That's why they got the idea to make the kites, and it looks like the yellow leaves also. So class, we have read about the nature that it inspired us very much. So class, read the chapter again. Bye bye. Take care yourself.